Good morning, students. Welcome back to your SST class of class 4. Today, we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, Natural Resource Soil. As we all know, soil is very important in our life. If soil is not there, there will be no plantation, no greenery, nothing at all anywhere. No plants means no oxygen, and we will not be able to survive. Soil, a natural resource. Soil is one of the most important natural resources. The topmost layer of the Earth's surface is made up of soil. Plants grow on soil. We grow food on soil. Soil is home to many small animals and insects. As we all know that soil is an important natural resource because it helps us to grow food and also provide us many gases like oxygen, carbon dioxide, etc. As we all know, soil is the topmost layer of the earth crust and it is known as soil, right? Soil helps us to grow plants and with the help of this soil we grow plants and plants उगाते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट्स होता है वो अंदर रहते हैं, स्नेक्स, many insects also live there like microorganisms जो soil को अच्छा बनाने में help करते हैं. How is soil formed? Soil is a mixture of broken rocks and decayed organic materials. This mixture of rocks, minerals, dead and decaying plants and animals, air and water together makes soil. Natural forces such as wind, rain, and sunlight help in the breakdown of rocks and minerals. This process is very slow. Therefore, soil formation may take more than 1,000 years. You can see that how soil is formed by the dead and decaying plants and animals and the broken pieces of rocks. So, it is a very long procedure as soil is formed by these things and with the help of air and water together it makes soil. There, there are some natural forces that help in the breakdown of rocks and minerals. First of all, by rain, you can see by rain the soil is run off. After that, too much of the wind also take off the soil and sunlight also help in the breakdown of soil. By sunlight, the soil gets dry up and after that it becomes weakened and it is drawn by soil and water. So the formation of soil is very slow. Therefore, this formation takes thousands of years to reform. Now we will study the types of soil present in India. You can here see a map of India where you can see the blue color is the alluvial soil. This yellow color shows desert soil. Light green color shows this one black soil, right? After that, the little bit purple is there which shows mixed red and black soil. Light this peach color shows the red soil. After that, some light patches of pink is laterite soil. And this dark green is mountain soil. So variety of soil is present in India. Come on, let's read about them. Types of soils. The type and composition of soil of a place depends upon climate and rainfall.
Different crops need different types of soils to grow. There are six main types of soils found in India. Number one, alluvial soil. It is composed of silt deposited by the mighty Himalayan rivers. It is rich in humus. The places where it is found: the northern plains, the coastal plains, and the delta region of West Bengal. Crops grown in the soil: rice, wheat, sugar, cane, cotton, jute, pulses, and oil seeds. एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट होता है बाय द रिवर्स। जब रिवर्स ऊपर से मूव करके नीचे आ रही होती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वो अपने साथ साथ वहाँ का सिल्ट ले आती है, यानी वहाँ का रेत ले आती है, जो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, हमारे बैंक ऑफ द रिवर्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का एलुवियल सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता है ह्यूमस में। इट मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी है उस सॉइल की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसमें हम बहुत सारी क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, कॉटन, jute, many oil seeds like mustard seeds, etc. Black soil. It is dark in color. This is because it is formed from the lava that comes out of volcanoes. Northwestern and the central parts of the southern plateau. It is mostly found in Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. Crops grown in soil. Ideal for growing cotton. It is also known as cotton soil. It is also good for growing sugarcane, oilseeds, and wheat. You can see black soil is dark in color. And do you know why the black soil is formed? Means why the color of the soil is black? Because of the lava rocks. What happened? Now जो लावा बाहर आता है वॉल्केनोज में से, अब उसकी वजह से सॉइल को काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग का इफेक्ट होता है। वेदरिंग मतलब ठंडा गर्म, कभी वो सॉइल ठंडा हो जाता है लावा की वजह से, राइट, लावा गिरने की वजह से, कभी गर्म हो जाता है गिरने के बाद, because of the cooling, or you can say the solidification of the lava which comes which comes out from the volcano eruption, राइट, यानी जो लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद वो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, और उसी से क्या बनता है, ब्लैक सॉइल बनता है। Sandy or desert soil. It contains mostly sand. It is infertile, but it can be made fit to grow crops with the help of irrigation. Places where it found: desert regions of Rajasthan and Gujarat, where there is little rainfall. Crops grown in the soil: wheat, millets, barley, and pulses. In this soil we are only having sand. इसमें सिर्फ क्या होता है, रेत रेत होता है, but it can also be used as growing crops, right? ये वाला सॉइल भी ग्रोइंग यानी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल many vegetables are grown here like carrots, potatoes, tomatoes, right? But they need proper irrigation facilities, यानी यहाँ पर पानी पहुँचाने बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे से यहाँ पे पानी नहीं देंगे तो इस सॉइल में क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी। और हमें ये सॉइल कहाँ मिलता है, डेजर्ट रीजन्स में ऑफ राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। रेड सॉइल. इट इज रेड इन कलर. This soil is not very fertile but can be made fertile by adding fertilizers. Places where it is found: Tamil Nadu and Karnataka. It is also found in Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, and North
eastern states. The crops grown in the soil are groundnut, jowar, bajra, and ragi. Grow well in this soil. Do you know why this red soil is red in color? Because of the presence of iron. आयरन की प्रेजेंस की वजह से काफी ज्यादा रेड हो जाता है कलर में. दिस सॉइल इज नॉट दैट मच फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है जिस तरीके से हम इसमें सारी क्रॉप्स ग्रो सके. तो इसमें हम फर्टिलाइजर ऐड कर कर इसको हम प्रॉपरली एक फर्टाइल सॉइल बना सकते हैं. और इस सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें उगती हैं वो हैं ग्राउंडनट्स, दैट इज की पीनट्स, बाजरा, रागी, सेक्ट्रा, जो काफ़ी रिच प्रोटीन सोर्स माने जाते हैं. Mountain soil. It is rich in humus. Humus makes the soil fertile. The place where it is found in the Himalayan region, Sikkim, and Arunachal Pradesh. The crops grown in the soil: wheat, maize, fruits, tea, coffee grow in this soil. You can see mountain soil. It is found in the Himalayan region and it is rich in humus. यानी ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होता है जिसमें हम काफ़ी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, fruits, etc. And these are found in the Himalayas. जहाँ जहाँ Himalayas होते हैं, that is our Himalayan region, then Sikkim, Arunachal Pradesh, etc. Literate soil. It is found in the areas that receive heavy rainfall. It is rusty red in color because of the presence of iron and aluminium. It also used to make bricks. Places where it is found. It is found in the parts of Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Odisha, Karnataka, Bihar, and Meghalaya. The crops grown well in the soil are tea, coffee, coconut, rubber, grow in this type of soil. See, this is laterite soil. It have a dusty red color due to the presence of iron and aluminium in it, and it is also used in making of bricks. See the type of crops grown at tea, coffee, rubber, coconut, areca nut also produce valuable building materials that I told you, that is bricks. Soil conservation. The topmost layer of the soil is the most fertile layer. However, this layer gets carried away by wind and water. This is known as soil erosion. जब पानी से सॉइल बह जाता है या विंड की वजह से उड़ जाती है ऊपर वाली लेयर, बहुत ज़्यादा हैवी विंड या हैवी वाटर के फ्लो से, सो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन. कि सॉइल खराब हो गई, सॉइल वहां से हट गया. ट्रीज आर cut for constructing roads and buildings. Cutting down of trees in large numbers is called deforestation. Roots of trees hold the soil in place, but in the absence of trees, the soil becomes loose and gets removed. What happened? Now, if we are cutting too much of tree, that is known as deforestation. तो क्या होता है? पेड़ हट जाएंगे, soil की layer अकेली रह जाएगी. And after that, the soil will become dry due to heavy sunlight. After that, when it is dry and by the wind it is blown away. विंड से वो उड़कर चला जाएगा, इसकी वजह से सारा सॉइल खराब हो जाएगा और हट जाएगा. धीरे धीरे वो लैंड बैरन लैंड बन जाएगा. Some important measures to prevent soil erosions are described below. First, planting trees or afforestation prevents the soil erosion. कि बहुत सारे पेड़ लगाने से हमारा सॉइल प्रिवेंट हो सकता है, बच सकता है खराब होने से.
covering bare farmlands with grass so that the soil is not exposed to the elements of nature। कि जो खाली पड़े हुए खेत है, लैंड्स है, उनमें हम घास उगा दें, जिससे क्या हो, हमारा जो सॉइल है वो खराब ना हो। आफ्टर दैट, टेरेस फार्मिंग in hills and buildings embankments along the river banks prevent soil erosion। टेरेस फार्मिंग we also know कि छत पर करने वाली फार्मिंग या जो हिल्स पे जो फार्मिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, जो बहुत ही सॉइल इरोजन को हेल्प करती है, मतलब बचाती है सॉइल इरोजन होने से। यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यानी अगर हम देसी खाद यूज करेंगे जिसमें हम नेचुरल खाद यूज करेंगे, नेचुरल खाद लाइक काउ डंग, डेड लीव्स इन प्लांट्स। आफ्टर दैट, स्टॉप ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड। तो हमें जो ज़्यादा भेड़ बकरियां चराना है वो भी बंद करना होगा अगर हमें अपना सॉइल बचाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रास खाती है, और अगर वो ग्रास खाएंगी तो वहाँ पर सॉइल अगेन बैरन होने लगेगा। राइट, पर एक जगह की ग्रास खाती जा रही है, इससे क्या होगा कि लैंड बैरन होता चला जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। So these are the techniques how we can conserve soil: terrace farming, crop rotation, cover crops, windbreaks, contour farming, strip cropping, conservation tillage, no-till farming, buffer strip, drop inlet and rock QT. So these are the methods of soil conservation.